afternoon, sir. Welcome to this webinar, sir. Right. So again, as per the mandate of Ministry of Education, this webinar is under IIC, and the topic of discussion is investors' opportunity for growing startups. Right. Please. So students, those who are interested to start up their venture, there is a proper ecosystem which the government of India and we says there has a should be a proper ecosystems. There has to be a focus area. There has to be a vision. There has to be a policy period. And the recognized entrepreneurs, recognized startups through recognized incubators, they work on with their flow chart and be able to deliver some kind of a prototype. When prototype is been completed and when we think that the prototype is good for mass diffusion, that means the prototype which is going to solve some kind of problem. So we will start up. I'll be able to give you some kind of inputs over here, which will help us to understand what exactly before going to start on the angel investing on VC funding. This is the topic of angel investors today. But before we're going to start the angel investors, I want to just give you what exactly before angel investors. There is a thrust area. Means when we are going to work on with the startups, when we are going to work on with the various angel investing funding systems we require, there is a certain inputs which has been given by the government of India to all our incubators that they have been looking forward for certain things on the thrust area. So what are the thrust area? If you are from the background of mass communication, if you are a background of IT, so this is the thrust area. I'm going to show you the list of where you will be able to qualify. In these areas, the government of India, the nation wants the solutions to various problems. Means the nation is looking forward that our students should be able to solve these problems. So what are the thrust area they have identified? So first of all, for that is, if you look towards thrust area, this is for the first thrust area I've been mentioning over here. This is for the computer science department. That means those who are BCA, those who are IT oriented, they want artificial intelligence, Internet of Things, blockchain technology, robotics, quantum computing, data sciences, cyber security, 3D printing and design, and augmented reality and virtual reality. These are the areas which has been earmarked by the government of India when looking forward for engineering students. So these are the various systems engineering, sustainable computer science, biology engineering, the smart cities, the waste technology, the law engineering law, the climate sciences, the biosimilar technology, the genome engineering and applications technology, the precision health technology, the infrastructure engineering, control systems, environmental geotechnology, earthquake engineering. So these are the aqua food technology, organ printing technology, nutrition technology, drug engineering, cellular agriculture, sensor technology, electric vehicles, energy storage, magnetism, levitation, photonics and low cost desalination plants, and autogenetics. So then the wearable devices, the gamification, the telemedicines, the molecular manufacturing, the ArtNet fuels, the real-time translations, and the synthetic biology, and the biomimetic novel materials, and lab of on-the-chip cloud technology, digital holography, 3D imaging, just like we have seen one on the Subhash Chandra Bose statue has been there on the in near India Gate. The immersive with virtual reality, the human centered computing and design thinking. The students who are from the BBA and for the MBA, they can look on for the solution to the technology management, the real estate management, the event management. Event management is the BGMC also can look on for that, but how to manage the events, big events like Olympics and various other world games.
then engineering management, then artificial intelligence, machine learning and deep learning, the innovation management and innovation. Then there is going to be the incubator, prototype, lab with adequate machinery, 3D printing for quick prototyping for student, business ideas, consulting. Then heritage management, lot of monuments has been there, which has been not been properly managed. The heritage management, design thinking, operations management, behavioral organization behavior, strategy, the management information system, the social engineering, enterprise management, sports management, and art and craft. These are the areas. Then the design and media. This is the animation, Apple design, ceramic glass design, these film, video, communication, graphic designs. These are the area which has been earmarked. And life skill management. This is the only one which has been required. Anyone can be able to solve these problems. So these are the problems which the nation looks eagerly from the side of the students, from the side of the technocrats, from the side of the behavioral scientists to solve these problems over here. The stress management, the personal effectiveness, the road response effectiveness, organization, self attitudinal shift and decision making, and develop consciousness, transcendental meditation, emotional intelligence, leadership in excellence, right? So the thrust area means the area which has been earmarked, right? So again, there is a grant. I'm going to show it to you how the grant system works and what is the policy and what exactly you have to look on. I'm going to show you the grants given by the Innovation Institute Innovation Council, AICT. They have given the grants. That this is the list of the grants they have received. Program name MB, IBE, Yukti 2.0, MBA. So this is the list of the organizations like say for example who have been granted amount, like this is 60 lakhs, this is 10 lakhs, 89, right? So this has been mentioned over here. I can tell you that ARI 5G network planning system powered by the big data UAVs, Netaji Subhas Institute of Technology, this Delhi, they have received this much amount grants, unit 10 lakh plus amount they have received. Then VIPS, Vivekananda Institute of Professional Studies, they also have received 6 lakhs grant. Vani Smart Voice Prosthetic Device, this they have done through NIC 2020. They have moved through NIC 2020. There are various incubator from which you are going to move. Yukti 2.0, MB, IVV. These are the areas from where you can be able to bring on your prototype over there. And if they feel it that this is good enough for commercialization, then they will give you grant to further. Netaji Subhas, like over here, VIPS, you have mentioned one more. I can show you the from Delhi. This is Delhi Technological University certification X smart way of authentication documents with blockchain technology they have used over there. So these are the three. At if you look towards all India level, there are 17 grants has already been given. Right. So these two things I've told you what is the outcome, what is the initial phase. I'm going to bring on what is the insight phase over there. Let me show you the other parts. Now I'm going to show you the startup policy of the government of NCT of Delhi. This is what the startup policy. This is office from the Office of Commissioner of Industries, Government of NCT of Delhi, Udyog Sadan, Patparganj Industrial Area. So startup policy for NCT of Delhi, we are coming under this vision of this policy is to make the NCT of Delhi one of the top 10 startup destinations in the world. This is what the ecosystem they are talking about. When we talk about the angel investors, we see before building on with this thing, we have to look on what are the thrust area, what are the output we have received so far as far as India is concerned. 3 institutions already have received. This has been there 60 lakhs, 6 lakhs and 10 lakhs they have received. So here the policy, what policy, how you can be moving through the policy means what are the basic things which we have to look forward. So when we are going to put up a proposal for our grants, you have to make the proposal keeping in line the startup policy of the NCT of Delhi into consideration. So
we have to comply the national policy. What the national policy of the state policy of the government of and city of Delhi envisage. So they want to make the top 10 destination of the world, not only in India, but the world. The by fueling the vibrant startup ecosystem and bring together all stakeholders ecosystems, leveraging global best policies to enable startups to a global scale. One, what is the policy period? This is already effect from the date of notification. What are the area? Now here they have worked on these. These are the focus area for this policy. Artificial intelligence, robotics is that one area in the world which can replace each and every work in on this universe. When I say universe, the most intangible things, tangible things you can replace very easily, but the most intangible things, the hardest part of intangible things is the consultancy, teaching, or the lawyers and the judges work. Means judges used to have give decisions like Babri Masjid decisions and the Gyan Vape decisions. So artificial intelligence is that thing which can even have got a potential to replace the judges. That means it's going to become a mega brain which is going to give solutions to the complex problems of the world, keeping in view all single aspect into consideration. So this AI is the foremost thing where anybody can venture it with their own innovations and robotics. Automation, technical innovation, cybersecurity, big data, education, solid waste management, urban infrastructure planning and environment, renewable energy, industry revolution 4.0 technologies. Now here you have to look on what is industrial revolution. And then I say, what is industrial revolution 4.0 and what are the technology which are associated with it? The moment you see this industrial revolution 4.0 technologies, you can work on, search on, and find out through Google what are the technologies which we're talking about over here. So creative ideas pertaining to sectors like not limited to agriculture, e-commerce, healthcare, logistics, transportation, rural innovations, e-governance, and other focused area identified including the market demand as per the cutting edge technologies are concerned. So what has been requirements? Any individual working startup wishes to avail the benefits, must be a resident of Delhi, must be working on an idea with its innovative and scalability. The applications shall be reviewed by the Startup Evaluation Committee. What is that Startup Evaluation Committee? An entity shall be eligible to be recognized as a startup under the Delhi Startup Policy. It fulfills six conditions below, or it is an entity recognized under the Startup Initiative and fulfills the sixth conditions below. It was registered not more than 5 years before the date of application. मतलब 5 साल के अंदर से पहले का उसके पास एप्लीकेशन जिस दिन आपने अप्लाई की उससे 5 साल पुराना चीज नहीं होना चाहिए. It is registered as a private limited company, companies under the Companies Act 2013, or registered as a partnership firm under the section 59 of Partnership Act 1932, or a limited liability partnership under the Limited Liability Partnership Act 2008 in India. Means this company which you want to start up entity is going to be any of these three. What is third one? It has an annual turnover not exceeding 5 crore. It has to be anything below 5 crores for any preceding financial year. 4, such an entity has not been formed by splitting or restructuring of business already. ऐसा तो नहीं किसी और already business entity चल रही हो और इसको restructure कर दिया गया हो और आपका नया नाम देके वो शुरू कर दिया है, या कोई ऐसा business entity जो already existence में है, already वो business model existence में है, तो उसके ऊपर भी स्टार्टअप नहीं आएगा क्योंकि वो बिजनेस मॉडल बिल्कुल नया होना चाहिए. Then next is it is working towards innovation, it is working towards development, or it's working towards improvement of products or processes or service. तीनों चीजें, products, processes and services. जो हम processes की बात करते हैं, this is the standard operating procedures. Services की बात करते हैं, goods and services tax discipline, the GST.
So it is a scalable business model with a high potential of employment generation and wealth creation. That means the system which we are talking about must be generate an employability, must be generate wealth, and it is to be incorporated or registered in Delhi. It must be registered in Delhi with the GST commissionerate in Delhi, right? Then sometimes these six conditions has been taken up. Then next is an organization incubator. When recognized incubator, it has to come out through a organized incubator. What is that organized recognized incubator? An organization is designed to support startups companies during the early stage in the help. Now madam is working on that. We are already put forward our system as a recognized incubator. So recognized incubator means that is been be able to give you services such as physical space, capital, coaching, mentoring, common services, including corporate and the legal services, providing the networking opportunities. Any entity fund registered under any central state government initiative which has been there, incubation shall also be considered as an incubator in this policy. For instance, the technology business incubator TBI जिसको बोलते हैं, then Department of Science and Technology, and also Atal Incubation Center under Niti Aayog. So there are three already been there. Then incubator must offer a minimum of 2,000 square foot of area of a usable space for its incubators. Incubator entity must be registered under any of the following categories: society under the Society Registration Act 1860, society section 8 company under the Companies Act 2013, and private limited company under the Companies Act 2013, public company under the Companies Act 2013, and limited liability partnership under the Limited Liability Partnership Act 2008, then public charitable trust under the Indian Trust Act 1882. Besides, the above startup evaluation committee may be able to consider the case of reputed academic institutions like your Tecnia and then university, GGSIP University, deemed university, victimize as an incubator, even if the same does not fall under any of the above categories. University for purpose, you know about fabrication lab. So lab has been there, which is going to provide you market space, industrial workshop where user can build down prototypes. Prototypes will help you to design a particular suitable model of your product to be put in for the commercialization. The specialized fabrication tools would be there, electronic equipments would be there, both manual and computer aided would be there. Then co-working space would be there, refer to startups and so on. Startup evaluation committee would be there. So those who's going to finalize that the prototype is worth enough to go in for, then it will put forward for task force. The startup task force will be team responsible for day-to-day implementation and monitoring and outcome of the Indian Delhi startup policy. Then policy monitoring committee, infrastructure support, and Delhi as an innovation hub. What kind of innovation you are going to bring in? Now here, the incubator will provide startup with office space, common office facilities, and qualified mentor networking and fundraising opportunities. This is what fundraising opportunities, where we are going to bring in the angel investor and venture capitalist. आपने नाम सुना होगा बिल गेट्स का. Bill Gates is, when he started his venture, he has been starting his first venture as a bartender. He is basically steward. He's a steward. Then and later on, the Microsoft, जिससे हम बात कर रहे हैं आपको, Microsoft team जो हम बात कर रहे हैं, he is the owner of the Windows. He is the owner of Windows and he is the owner of the software. It was first launched in 1995. जो माइक्रोसॉफ्ट का पहला वर्जन आया था 1995 में आया था, फर्स्ट टाइम विंडोज वाज लॉन्च. उससे पहले आप कोशिश करेंगे देखेंगे तो वर्ड स्टार पे काम होता था, फोटोन पे होता था, कोबोल पे होता था, पास्कल पे होता था काम. लेकिन ही इज द फर्स्ट टाइम जिसने ग्राफिक्स को सिस्टम पे लाया और वर्ल्ड ओवर 98% सिस्टम्स, 98% आपके जो वर्ल्ड ओवर लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, आपके डेस्कटॉप्स हैं, उसके ऊपर विंडोज एप्लीकेशन चलती है. 98% ऑफ द सिस्टम्स
are using Microsoft applications. Number one. What is the wealth generated by this? It is a creation of Bill Gates is the creation of venture capital. Venture capital जो था उस concept के through Bill Gates सामने आए. Because of the venture capitalist venture, lot many people has invested in his ideas, and that is how the Microsoft was created. Microsoft was created. Number two, what is the total earning? If I say what is the total earning of the Microsoft, it's a 2.5 times of what the whole of India earns. जो एक साल में एक इंडिया पूरा 1.25 करोड़ पॉपुलेशन जो अर्न करता है, हमारा जीडीपी उसका 2.5 times is the net worth of this company. So this is the one, because I've just tried to create a contrast. Now अगर आप कोई वेंचर कैपिटल लगाना चाहते हैं या आप कोई स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, आप अपने आप को बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे पाते हैं कि हमने भी सिस्टम शुरू किया है, ये प्रोडक्ट हम लेके आए हैं, प्रोडक्ट हमारा चल रहा है. आप लोग ये मत समझिए कि हम सबसे नीचे हैं, हमारे पास कोई इन्वेस्टर नहीं है, हम नहीं कर सकते. आइडिया, फ्लिपकार्ट का नाम आपने सुना होगा. फ्लिपकार्ट, ही इज द समीर भाटिया का आपने नाम सुना होगा. समीर भाटिया जिसने हॉटमेल शुरू किया, जो मेलिंग जो हम बोलते हैं ईमेल, ही इज द पर्सन हु स्टार्टेड द ईमेल कंसेप्ट hotmail.com. वो बाद में सब लोगों ने खरीद के उसको अपने साथ जोड़ लिया, उसका सब कुछ टेकअप कर लिया. बट ही इज पर्सन लाइक यू, समीर भाटिया, अगेन फ्रॉम इंडिया. नेक्स्ट इज दैट हम बात करते हैं कि एप्पल का सिस्टम सिक्योरिटी फीचर्स के अंदर नोबडी कैन ब्रेक. मेरठ के अंदर 9 साल के बच्चे ने एप्पल का सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ दिया. उसको बुलाया गया है आईफोन वालों ने, भैया इस बच्चे ने कैसे तोड़ दिया. मतलब ही इज सो इनोवेटिव, और उसने थोड़ी सी टाइम में उसको एप्पल का सिस्टम ब्रेक करके बुला लिया. एंड दे वांट टू improve their security features, so they have called him up from there. So small town boys, small town girls, small towns people are coming very fast on these areas. So Delhi is also a small, you can say a small place, because a geographically very clustered one. Same is a small, it's not having a big geographical area as compared to Haryana, as compared to UP and other things, but a very small place, Delhi, geographically. So it has got a potential to match up at least to come into the first 10 units. Flipkart का नाम सुना होगा आपने. Flipkart जब शुरुआत करी, फ्लिपकार्ट ने प्रॉब्लम से शुरुआत की. प्रॉब्लम क्या? बुक चाहिए मेरे को, आई वांट टू हैव ए बुक. और बुक मैं कहां से लूं? बुक खरीदने के लिए कहां जाऊं? नई सड़क. चलो दिल्ली वाला तो नई सड़क चला जाएगा, लेकिन जो फार फ्लंग एरिया में रह रहा है, सिक्किम में रह रहा है, आपका दार्जिलिंग में रह रहा है, वो कैसे बुक तक पहुंचेगा? जब दिल्ली वाले को पहुंचने में इतना टाइम लगता है बुक तक, तो वो बेचारा दूर का बच्चा कैसे पहुंचेगा? Then the concept came in the mind of that owner and introduced those things. Flipkart started with a problem of book. तो Flipkart जब initially आया था, बुक के ऊपर आया था. इनिशियली बुक्स के ऊपर लोग जब परचेजिंग शुरू करी थी, later on it has been diversified into other areas. So students, innovation hub we are talking about, Delhi Innovation Network, matching capital grants of the university incubator, training the incubator managers, training the existing manager with a university, fabrication labs जो fabricate करके आपको prototype दिखाना है, उस fabrication labs को at least Delhi should come out, set up at least 5 fabrication lab by 2025. The labs will be accessible, recognized for a startup. जो आपने startups बनाए हैं उस lab में वो test होंगे. वो टेस्ट करने के बाद 16 आवर्स के अंदर दे विल बी मेक इट ऑपरेशनल. 7 days वर्किंग होगा, वीक होगा, उसके अंदर आपका टेस्टिंग लिया जाएगा उस प्रोडक्ट का. जो भी आप प्रोडक्ट बनाएंगे,
उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए वेदर सेफ्टी फीचर्स हैज बीन नॉट बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, इट हैज यूज्ड द सेफ्टी फीचर्स, मतलब जो मशीनरी के अंदर सेफ्टी फीचर्स होते हैं, एसेंशियल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के जो पार्ट्स होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होती है, आर दीज थिंग्स आर देयर। और जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसके ऊपर, क्या वो रॉ मटेरियल प्रॉपरली एज पर द नॉर्म्स है कि नहीं है, क्या उसमें ऐसा कोई टॉक्सिक इन्वेस्टमेंट नहीं कर दिया, टॉक्सिक डाल दिया। अगर बच्चों के लिए टॉयज बना रहे हो, उस बच्चा उसको मुंह में लेगा और उस रॉ मटेरियल में कुछ ऐसी चीज पड़ी है जो बच्चा अगर मुंह में लेगा तो उसके लिए नुकसान होगा। तो इन सब चीजों से निकलने के लिए उन सब प्रोटोटाइप्स को टेस्टिंग की जाती है। सपोर्ट फॉर प्राइवेट फैब्रिकेशन लैब, वहां पे भी इसको टेकअप किया जाता है। फिर दे आर गोइंग टू मेक ए ग्लोबल लॉन्च पैड वेयर they will be showing the prototype, that is known as a place where they can be able to show up their product whatever you have created must be featured, that is a product display। आप अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट डिस्प्ले लगा सकते हो कि ये प्रोडक्ट है, ये डिस्प्ले है, इसकी ये यूटिलिटी है, इसकी कॉस्टिंग ये है, और इस कॉस्टिंग के हिसाब से इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, और उसके हिसाब से प्रोडक्शन के लिए आपके एंजल इन्वेस्टर्स आएंगे। तो technology enablers, incentives for startups, interest-free loans, and general administrative support like companies के लिए आपको कंपनी रजिस्टर करवानी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, आपको आपको टैक्सेशन के लिए कुछ चाहिए, आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ चाहिए, कोई लीगल हेल्प चाहिए, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चाहिए, कोई बैंकिंग फैसिलिटी चाहिए इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उन सब चीज को एड्रेस किया जाता है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, these then you have, if you are making some kind of new innovation, अगर आपने कोई ऐसी चीज बना दी जो फर्स्ट टाइम हो रही है और उसके अंदर some kind of new thing you are, तो पेटेंट फाइलिंग, कॉस्ट रीइंबर्समेंट, यू कैन बी अप्लाइंग फॉर द पेटेंट्स। पेटेंट्स अप्लाई करेंगे, आपके नाम पे पेटेंट होगा। पेटेंट का मतलब है कोई भी उस टेक्नोलॉजी को आपकी परमिशन के बिना उसको यूज नहीं कर सकता। अगर वो यूज करेगा, ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम यू। सो उसके लिए जो भी आपने पेटेंट बनाया है, जो भी प्रोटोटाइप बनाया है, जो भी आपने फर्स्ट टाइम सिस्टम बनाया है, उसको आप लीगली सिस्टम के अंदर पेटेंट फाइल करके सिस्टम में सेटअप करेंगे, ताकि वो दूसरा कोई इसको चुरा ना सके। दिस कम्स अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR। IPR cell is going to assist you in that part. Then public procurement, 10% of all goods and service produced by Delhi Ministry and उसके अंदर गवर्नमेंट खरीदेगी। अगर आपको लगता है कि भाई ये वाकई भी किसी अच्छी चीज के लिए है, कोई अच्छी चीज ऐसी चीज बन रही है, जैसे मान लो किसी बच्चे ने प्रोटोटाइप में बनाया कि मैं जो कोरोना टेस्टिंग किट है, जो आपको बाहर मतलब 200 रुपए में आता है, तो वो मैं 50 रुपए बना के दे रहा हूँ, तो सर्टन पोर्शन द मिनिस्ट्री विल आल्सो गोइंग टू परचेज। तो पैंडेमिक टाइम में बहुत सारी चीजें लोगों ने बनाई है। एकेडमिक इंटरवेंशंस कहाँ पे आएंगे, जहाँ हमें एकेडमिक इंटरवेंशंस चाहिए होते हैं। 7 इनोवेशन बूट कैंप्स, हियर यू विल हैविंग वन बूट कैंप जहां अपना आपको शो करेंगे और आपको मेंटर्स गाइड करेंगे कि भाई इन एरिया के अंदर, इस प्रोटोटाइप के अंदर ये चीज नहीं बना सकते हैं, और इसको और डिफरेंट तरह से आप डेवलप कर सकते हैं, और इसको डिफरेंट स्मॉल बिजनेस आइडिया के रूप में प्रोपोगेट कर सकते हैं। दे विल प्रोवाइड यू टोकन फंड्स टू मेक इट अ वायबल वन, कि आप उसके कई सारे मॉडल्स बना के, प्रोटोटाइप्स के कई सारे मॉडल बना के, एंड यू कैन बी एबल टू शोकेस योर आइडियाज इनटू वेरियस कंपटीशंस, और वहां पे आपको फीडबैक मिलेगा अपने प्रोडक्ट के बारे में, और यू हैव टू विन प्राइजेस ओवर देयर, योर टेक्नोलॉजी ऑन योर इनोवेशन और योर पेटेंट्स। देन प्रोजेक्ट वर्क, here idea generation, there will be some kind of project work you can provide it to some commercial organizations। awareness and outreach support, an idea challenge आपको टेकअप करना सकता है। इस आइडिया के ऊपर कोई और दूसरा लोग काम कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर, that can be work on। then various hackathon, governance, innovations and enablement, entrepreneur startup recognition, दिल्ली पोर्टल पे आप अपने आप को डाल सकते हैं। हेल्पलाइन है, प्रमोशन है, रिव्यू मैकेनिज्म है। अब ये सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि मैंने जो प्रोटोटाइप बनाया, जो मैंने अपना स्टार्टअप बनाया, जो पेटेंट भी करवा लिया, सबको बता भी दिया, सबको सिखा भी दिया कि क्या है इसके अंदर, अब मेरे को फंडिंग कहाँ से मिले, मतलब हाउ आई कैन गेट द फंडिंग। सो टू थिंग्स आर देयर, जिसको हम बोलते हैं फंडिंग्स, जहां से हमें मिलता है। वीसी, दैट इज नोन एज वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब ये होता है कि
आपका वेंचर है, मैं जैसे आपका बिल गेट्स ने वेंचर बनाया माइक्रोसॉफ्ट, तो वेंचर किसका है? बिल गेट्स का। वेंचर इन्वेस्टर, जब आप उसको प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोटोटाइप को बताते हैं, अपने टेक्नोलॉजी को बताते हैं कि टेक्नोलॉजी है, ये हमने बनाई है, और दिस टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू amass the problem solver for this amount of work। मतलब इतनी तरीके की चीजों को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। आपको ये देखना है कि एज ए मैनेजर, एज ए एमबीए, एज एन एमसीए, as an journalism student, how I can save. Now when I say the save in time, save in steps, save in money, save in resources। मतलब जो 4 M's जो हम बोलते हैं, मैन, मशीन, लेबर, जो भी हम लगा रहे हैं, कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लगा रहे हैं, उन सब में कोई भी चीज, अगर कोई स्टेप हम चला रहे हैं, उसके अंदर पता चला हमारे 10 स्टेप का प्रोसेस है, उसको मैं 2 स्टेप में कर देता हूँ। सो आई कैन बी एबल टू सेव ऑन द 8 स्टेप्स। दैट इज इनोवेशन। मीन्स आपने उसी चीज को, वही आइडिया, वही सुटेबिलिटी के साथ में जो 10 स्टेप प्रोसेस से जा रहा था, उसने उस सुटेबिलिटी प्रोसेस को कंप्लीट करके 2 स्टेप में कंप्लाई कर दिया। यू कैन सेव मनी ऑन द 8 स्टेप्स। That is an innovation. And number 2, when we put up, showcase those things in front of a venture capitalist, so venture capital will see and gauge, because they have got idea। वो companies होती हैं, these are the bigger companies, these are the bigger companies who are going to invest in your company, invest in your company। So you are the creator of the venture इन्वेस्टर्स, तो वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। जो कंपनीज का मतलब होता है, जैसे मान लो आपने बहुत सारी भी कंपनीज बताता हूं मैं, जो इंडिया के अंदर टॉप 10 कंपनीज कौन कौन सी जो वेंचर में इन्वेस्ट करती है, आई विल टेल यू। एंड द एंजल इन्वेस्टर्स आर दोज इन्वेस्टर्स, एंजल मींस those who are going to come as an angel for your you can say support। So they are going to invest from their own savings। So angel investor is a high net worth person who provides capital for the small startups, entrepreneurs, usually exchange equity। भाई हमने आपके सिस्टम में पैसा लगाया, मान ली 1 करोड़ रुपए लगाया, 1 करोड़ के मेरे को शेयर दे दो, आप अपना सिस्टम प्रोपोगेट कर लो। आपने पेपर सिस्टम प्रोपोगेट करा, कल को आपकी कंपनी मान लो 2000 करोड़ की बन जाती है या 50,000 करोड़ की बन जाती है, तो आज के टाइम के हिसाब से, उस टाइम के अगर आपने उसको 10% या 20% भी शेयर दिए, तो 20% शेयर अगर बढ़ते 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 आपने कितने फ्लोट किए, तो उसके हिसाब से उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो करती जाएगी। 2 तरह से ग्रो करती है मनी। जब हम कोई भी चीज में ग्रो करते हैं, हमने सामान लगाया, मैंने 10 रुपए की चीज बनाई और 20 रुपए में बेच दी, दैट इज नोन एज ट्रेडिंग, दैट्स नोन एज ट्रेडिंग। लेकिन आप लोगों को समझना है, बीबीए एमबीएस को हमें कभी भी प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नहीं देखना होता, हमें क्रिएशन करनी होती है वेल्थ। वेल्थ किसके लिए? स्टॉक जो हमने बनाया है, स्टॉक होल्डर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए हमें नेटवर्थ को बढ़ाना होता है। दैट इज आवर। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे, नोबडी इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी। एवरीबडी वांट। अगर आपने देखा कि ये सनसेक्स आज इतना 10% बढ़ गया, 5% बढ़ गया, 3% बढ़ गया, 0.5 अप गया, 0.5 डाउन गया, इससे क्या होता है? जो आपके स्टॉक्स हैं उनके शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं। अगर आज मेरा शेयर प्राइस 76 का है, कल को 86 का है, परसों 92 का है, सो दिस इज दैट मींस माय इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी इज इंक्रीजिंग। अगर मैंने आपका कंपनी में शेयर लिया, 1 रुपए का शेयर लिया, 1 रुपए के शेयर पे आपने मेरे से प्रीमियम चार्ज किया 210 रुपीज, मीन्स आई हैव टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी 211 रुपीज टू गेट 1 शेयर। नाउ द वैल्यू ऑफ द शेयर इज ओनली 1 रुपी, rest 200 I have paid for the premium to you, and now this premium you are going to invest in your venture to make it flower again, bloom again। So my investment as a shareholder is 1 rupee। मेरा तो 1 रुपए लगा, मेरा तो 210 11 रुपए खर्च करने के बाद मेरे को 1 रुपए की चीज मिली, क्योंकि मैंने 2210 रुपए का तो प्रीमियम दिया आपको।
वो प्रीमियम आपको कैपिटल के अंदर एक कैपिटल कॉर्पस के रूप में आपको मिल गया, लेकिन मेरी जो वैल्यू थी 210 रुपए की, 211 रुपए की जो वैल्यू थी, उसकी वैल्यू आपकी नजर में 1 रुपए। लेकिन जब मैं उसकी ट्रेडिंग करूंगा, जब आप उसकी स्टॉक की ट्रेडिंग करेंगे स्टॉक मार्केट में, तो 1 रुपए नहीं रहेगी उसकी वैल्यू। उसकी वैल्यू हो सकता है कि 700 रुपए हो। ट्रेडिंग करते करते 700 से वो, जैसे मारुति की जब इनिशियली जब बॉल रिंग करी थी मारुति की, तो 500 की स्लॉटिंग निकली थी, तो पता चला थोड़े दिन बाद 500 से नीचे आ गया, 470 हो गया। जब आपने लिया 500 का और आज 470 पे आ गया ना, मेरी बात करो, आज 470 का आ गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरी जो नेटवर्थ मैंने लगाई थी वो इरोड हो गई, मतलब मेरा पैसा डूबा है। This particular investment of my money in the stock is going down. It has been eroding, it has been depleting. So why should I invest? I have to take my money from out from there. So अब आपको एज ए इन्वेस्टर ये देखना है कि मेरी नेटवर्थ जो मेरे स्टॉक में लगेगी आगे जाके, अगर आपने कैपिटल रेज करना है, आईपीओ रेज करना है, कुछ भी लेके आना है, वो आपको बिल्डिंग ब्लॉक आज से सोचना है उसको, कि मैं उसको आज से अपने फाइनेंस को कंट्रोल करूं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं, हमने स्टार्टअप बनाया, हमने कंपनी लॉन्च करी, हमने पैसे फंड खाए और बंद करके भाग गए। मतलब you ditch the person who have shown a faith in you, and you ditch the person who has got a good, you can say, mindset for you, who wants to give you blessings। अगर हम पूरे एफर्ट्स नहीं करते हैं, अगर उसके हिसाब से पूरे एफर्ट्स नहीं करते हैं ना, वी फेल, और हमारे इनपुट में दिमाग में है कि हमें फेल ही होना है, तो फेल ही होंगे, चाहे कोई भी छुड़ाने आए, चाहे हम कहीं से भी फंडिंग लेके आ जाए। हमारा पर्पस ये है, हमें फंडिंग खानी है, फंडिंग खा के भाग जाना है, हमें कुछ नहीं करना है। मेरा तो कुछ लगा नहीं है, किसी और का लगा है, तो आई हैव टू जस्ट शो, बताना है मेरा प्रोटोटाइप ये है, ये है, ये कर दिया और मैंने पैसे खा लिए, खत्म कहानी। So, अगर ये वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ करना है एज ए स्टार्टअप्स इनिशिएटर, तो बिल्कुल ही जो और अच्छे लोग हैं उसके लिए आप खाई खोद देंगे, बहुत गलत काम कर देंगे। आपसे सबमिशन से ये है, जो भी आप कोई भी चीज शुरू करें उसके अंदर 100% एफर्ट, बिकॉज एज इज ऑन योर साइड, you are growing, you are having, as you grow up in age, so does your wealth, so does your wealth। आपको कुछ नहीं देना, आपको सिर्फ एफर्ट्स पुट अप करने हैं, अपने एफर्ट्स। कोई और पैसा लगा रहा है, आपको सिर्फ उसको 100% एफर्ट्स देना है। 24/7 फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए सोचना है कि मैं इसके फाइनेंशियल सपोर्ट जो मेरे को उसने आज 60 लाख रुपए दिया, इसको 60 के मेरे को 1-20 बनाना है। ये आपके दिमाग में चैलेंज होना चाहिए, एंड एवरी टाइम यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ, अपने आप को चैलेंज देना है और उस चैलेंज से ऊपर निकलना है। द फाइनेंशियल बैकिंग विल बी प्रोवाइडेड, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, दिस विल बी ओनली फॉर द वन टाइम, एक ही टाइम मिलता है। इट कुड बी ए, नॉट बी एन ऑन गोइंग प्रोसेस कि आपको देते रहे, अर्ली स्टेज में ही चलेगा ये चीज। हायर रिटर्न्स ऑफ देयर मनी, लुकिंग फॉरवर्ड। जो एंजल इन्वेस्टर्स आपके सिस्टम में आता है, वो चाहता क्या है कि मैंने आपको 1 रुपए लगाया, तो मेरे को कल को 2 रुपए मिल जाए, तो मैं फिर कल को पैसे मिलेंगे तो फिर किसी और एंजल इन्वेस्टर के पास, एज ए एंजल इन्वेस्टर किसी और फॉर्म के अंदर मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो हमें ये देखना होता है कि एंजल इन्वेस्टर का जो मनी होता है वो स्टॉक मार्केट में ना लगा करके, स्टॉक मार्केट में ना लगा करके वो डायरेक्ट आपकी कंपनी में लगा रहा है पैसा, आपके साथ शेयर ट्रेडिंग में आएगा, आपका पार्टनर बनेगा, आपका रिस्क का पार्टनर बनेगा। ही इज कंट्रीब्यूटिंग इन व्हाट फॉर्म? ही इज टेकिंग रिस्क फॉर यू, he is taking risk for you। so जो भी स्टार्टअप बनाए, it's not for just monetary return, it is going to be lot many things is required, industry mentoring, new generation, industry setup, entrepreneurs, skill sets, new way of doing things, right? All these things, accreditation status होता है उसका, वो आपके साथ लगता है। what is the important? Someone who is accredited investor is necessarily an angel investor, वो आपको स्टार्टअप में देता है। अब मैं, how do Indians qualify as an eligible national angel investors? Means पहली चीज उसकी, one, you need to meet one of the following requirements। Yeah, individual investor, you have to be net tangible assets of at least INR 2 crore excluding value of his or principal residence। जहाँ पे रहते हो, जहाँ पे करते हो, जो भी कुछ आपने लगा रखा है, उन सब को देखने के बाद वो ये देखते हैं कि इसके पास 2 करोड़ की प्रॉपरली स्टेजमेंट है। he can be able to come up early stage investment experience। तो आपको क्या करना होता है, जब 2 करोड़ का
एक हमने इन्वेस्टमेंट का टेंजिबल एसेट्स का जो एसेट्स का आपको पीछे सपोर्ट है उसका अगर मान ले 2 करोड़ का वैल्यूएशन लिया तो आपके इतने सारे साथ में बच्चे होने चाहिए 4 5 6 7 सो दैट दे आर गोइंग टू बिकम मेंबर टू फॉर्मुलेट ए कंपनी and each their network will be clubbed together and then you can put it across कि हम सब लोगों की नेटवर्क 2 करोड़ से ऊपर की बनती है तो हम लोग भी क्वालिफाई टू बी एलिजिबल नेशनल इन्वेस्टर आप भी एंजल नेशनल एंजल इन्वेस्टर के रूप में बन सकते हैं दे सकते हैं अगर आपको देना चाहते हैं अगर आज आपने कोई सिस्टम खड़ा किया है 2 करोड़ रुपए बन जाते हैं तो आप भी एक एंजल इन्वेस्टर बन सकते हैं एक्सपीरियंस एज एंटरप्रेन्योर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप का और नेटवर्थ आपका एटलीस्ट 10 करोड़ का होना चाहिए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होना चाहिए सेबी से रेगुलेटर के साथ होना चाहिए वेंचर कैपिटल फंड वीसीएफ में रजिस्टर होना चाहिए सेबी कैपिटल फंड में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तब वो एंजल इन्वेस्टर्स आपको सप्लाई कर सकते हैं वैल्यूएशन के अनलाइक वेंचर कैपिटलिस्ट एंजल इन्वेस्टर यूजुअली इन्वेस्ट देयर ओन मनी दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टर फिल्स द गैप बिटवीन द सीड फंडिंग that's often provided by the friends and family and funding through the venture through capital which may be necessary for the robust startup तो जब हम सीड मनी शुरू करते हैं सीड मनी से क्या होता है सीड मनी से तो प्रोटोटाइप आपका तैयार होता है मतलब आप टेक्नोलॉजी जो आपने टेक्नोलॉजी इजाद करी है जो इन्वेंट की है जो इनोवेशन किया है उसको आप दिखा सकते हो कि भाई देखो ये इस तरह काम करता है ये इस तरह वर्क करता है यू कैन शो द वर्किंग सो सीड फंडिंग इज ओनली टू क्रिएट द प्रोटोटाइप अब प्रोटोटाइप को मास प्रोडक्शन में ले जाना है तो उसके लिए आपको वेंचर कैपिटलिस्ट का सहारा लेना ही पड़ेगा आपको एंजल फंडिंग का सहारा लेना ही पड़ेगा वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं वो बिल्कुल कॉमर्शियल सिस्टम पे काम करते हैं एंजल फंडिंग एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो आपके सीड फंडिंग और वेंचर कैपिटलिस्ट के बीच के सिस्टम्स होते हैं जो इनिशियल इन्वेस्टर्स होते हैं जो आपको जब आपको वेंचर कैपिटल नहीं आ रही होती है आपके पास उनको लगता है वाइबल सोल्यूशन नहीं है नहीं चलेगा तो एंजल इन्वेस्टर्स आपके साथ शेयर होल्डिंग के अंदर आके आपको बेल आउट करते हैं एज पर इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर्स आर कंसर्न so somehow friends and family wealthy individuals groups crowdfunding is also one form of the angel investors right then advantage of greatest advantage of receiving fund from angel investors there's less risk is there you are only motivating on those parts motivating them to invest in your financial systems एंजल इन्वेस्टर टिपिकली एक्सपीरियंस दे आर पीपल लॉन्ग टर्म व्यू दे टेक द लॉन्ग टर्म व्यू गाइड भी करते हैं आपको कि हमारा पैसा लग रहा है बेटे इसको थोड़ा ऐसा करो इसको थोड़ा ऐसा करो इसके थोड़ा इन्वेस्टमेंट और डालो इस मॉडल पे काम करो इस बिजनेस मॉडल पे काम करो और वो आपके साथ साथ दिमाग भी लगाते हैं लॉन्ग पीरियड टाइम तक आपके साथ जुड़े रहते हैं जैसे अभी स्कूल के अंदर बिजनेस ब्लास्टर्स एक कंपटीशन शुरू हुआ है स्कूल एजुकेशन सिस्टम में गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने शुरू किया जहाँ छोटे छोटे बच्चे 12th 11th के देर कमिंग आउट विद इनोवेटिव आइडियाज ऑन स्मॉल थिंग angel investors have a lot of business experience they can provide that mentorship to you also research shows startups that are backed by angel investors are more likely to have substantial growth research show करती है ये कि अगर आपके साथ एंजल इन्वेस्टर जुड़ जाए तो उसका पैसा लगा तो आपको हर टाइम सपोर्ट करना चाहिए कि किसी भी तरह आप सक्सेसफुल हो तो अगर आपके साथ एंजल इन्वेस्टर जुड़ते हैं तो वो आपको बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिलेंगे जो आपको नॉर्मल वे में नहीं मिलेंगे क्योंकि उनका भी सिस्टम उसके साथ आपका जुड़ गया है क्रेडिबिलिटी हो जाती है एसोसिएशन हो जाता है कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं कस्टमर्स के साथ कॉन्टैक्ट हो जाते हैं इन्वेस्टर बैंकर्स को लेके आते हैं लॉयर्स को लेके आते हैं मार्केट नॉलेज उनके पास अच्छी होती है स्ट्रैटेजिस्ट फॉर सिमिलर कंपनीज कौन कौन सी कंपनीज है इस तरह की जो कंपनीज आपकी कंपटीटर के रूप में खड़ी हो रही है उसको भी आप यू कैन बी एबल टू वर्क ऑन विद दैट पार्ट कि मेरे who is going to actually dislodge me from this so angel investors makes it possible business owners many business owners have given away between 10 to 50% their startup in exchange funding मतलब 50% तक लोग इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं एंजल इन्वेस्टर्स आल्सो एक्सपेक्ट सब्सटेंशियल रिटर्न वो चाहते भी हैं कि आपको जो रिटर्न जो मिले उनको वो 10 टाइम्स मिले एटलीस्ट मैंने 1 रुपए लगाया तो मेरे को 10 रुपए मिले दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ यू so I'm going to show you what are the have a business plan this is one part because it's a long discussion which can be clear about your investor offering right so establish your roles with them 10 angel investors in India in 2022 these are the end of this is the Sanjay Mehta he is angel investor Sanjay Mehta technological investors has invested over 150 firms these are the OYO unicorns including Coin DCX, cryptocurrency exchange, blockchain. So this is Mehta's creations on that semi-registered office. Number 2 pay Anand Chandrasekharan. You can work on with that. You can see those things. Anand Chandrasekharan.
He has given very polygram. Anand was recognized young global leader in 2010 सिलिकॉन वैली में इसने स्टार्टअप्स किए, तो इसने बहुत सारी चीज़ों पे स्टार्टअप किया। याहू में टेकअप पहले इन्होंने काम किया। उसके बाद संदीप टंडन, ही इज थर्ड इन रैंक ऑन दैट, बट को फाउंडर ऑफ फ्री चार्ज। फ्री चार्ज आपने सुना होगा, मोबाइल पेमेंट सिस्टम है फ्री चार्ज। तो वो भी आपके इसी तरह से शुरू हुआ। कैटलिस्ट ओनर ऑफ नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया एंड नॉर्थ अमेरिका में बहुत सारे स्टार्टअप बनाए हैं। 11.5 करोड़ वर्थ नेटवर्थ इन्होंने स्टार्ट किया। रतन टाटा इज आल्सो इन दैट लाइन who has invested as an angel. Ratan Naval Tata businessman at under Tata Sons, ठीक है ना। Padam Vibhushan also, he is also Vijay Chandrasekhar Sharma is also angel investors. Inner Six, the Can Milap, ठीक है ना। अन अकेडमी, ये फर्म्स उन्होंने रिसोर्स की हैं काफी सारी। Sachin Bansal is also angel investors. Sachin Bansal invested in 14 Indian startups and business, ठीक है ना। Taxcron, An Academy Shorts, Singles, Spoon and Joy, Anther Energy. These are the Bansal where he has supported even the Ola. Kunal Behel is another person who has helped as a CEO co-founder of Snapdeal.com. He is also worked on with various funding agencies, Tamshake, BlackRock, SoftBank, प्रेमजी इन्वेस्ट। ये सब इन लोगों ने ना डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे काफी लोगों को सपोर्ट किया है। ओला कैब्स को सपोर्ट किया है, रोजर पे को सपोर्ट किया, अर्बन कंपनी, ठीक है। देन द गोकुल राजा राम, ही इज द अनदर पर्सन। ही इज वर्कड ऑन एजुफायर, लिव स्पेस, लूप, फ्लिपरा, व्हाटफिक्स। दीज आर द मेजर इन्वेस्टमेंट्स। राजा रामन इज कंट्री overseas caviar company, premium food ordering business. Doordash purchased 410 million square feet of area. Then Rajan Anandan, he is another person, again for co-founder Sri Lanka first speed fund in that case, Sequum. Then there are until now he has invested in 1880 startups, invested 1.5 million South African Asian startup companies में। फिर अनुपम मित्तल is another एंजल। शादी.com पे इन्होंने इन्वेस्ट किया है अनुपम मित्तल ने। शार्क्स, one of the sharks investors in Sony Live Business, Shark Tank India. How angel investor works, this is what how the angel investor investment screening process होता है इनका। अलग से पिचअप करना पड़ता है इन्वेस्टर्स के साथ मिलके, रिव्यूज बताते हैं आपके, रिव्यूज से कनेक्ट बनाते हैं आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ में, क्या कनेक्ट है। फाइलिंग राउंड होता है इनमें, आइडल सिंडिकेशन, डील सिंडिकेशंस होता है, क्लोजिंग डील होती है जहाँ पे आपको लगता है कि हमें इसके साथ जुड़ जाना चाहिए। So, how the angel investor different from angel? The main difference between angel investor and venture capital lies in the financial resources, the number of companies in which they invest, number of companies. So angel investors are often retired entrepreneurs, executives who want to remain involved in bargaining and business, fostering emerging entrepreneurs and growth in early stage companies. Like venture capitalists who manage the investment fund that consist of pooled money from various individuals via venture capital firm, angel investors invest in with their own money. This is the basic difference. So this is all I can say, because time permits me is very less. Topic is very special. Again, if you feel anybody wants to raise any query on that, or if you think that it is of any importance for you, so please send me a note of that, so we can be able to organize some more thing. Or if you think that it's of no importance, then we can be closing these things for future time. So I feel that something has been given in your mindset as far as this today's working is concerned, today's presentation is concerned. Thank you from my side. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Okay, thank you.